Hello everyone. I am going to start today's session at small part gestational age. ये लेक्चर जो है डिलीवर डॉक्टर नीलम जाहिर करेंगी. She has recently joined us. She has done FCPS and MRCOG, and she is FCPS gold medalist as well in 2018. नीलम ऐसा ही है ना आप? जी डॉक्टर हेरा. नीलम आप मेरे ही कॉन्वोकेशन की गोल्ड मेडलिस्ट हैं. Okay, चले. So this was a brief intro about Dr. Neelam. बाकी तो ये जब बोलेंगे तो आप खुद सब सुन लेंगे. Before this, I will start today's session. मैं थोड़ा सा brief intro दे दूँ. We are planning to launch our course for July 2024 for MRCG Part 2 theory exam. और इससे पहले हम इसको लॉन्च कर रहे हैं ऑफिशियली. वी हैव प्लान्ड फ्यू ओरिएंटेशन सेशंस. अब जिसमें कुछ सेशंस मेरे होंगे, कुछ डॉक्टर नीलम के होंगे, कुछ डॉक्टर अक्सा के होंगे. इसके अलावा हमारे 2-3 कोर्स मॉडरेटर भी होंगे, लेकिन दे विल बी एक्टिव इन डिस्कशन ग्रुप्स ओनली. बट मेजॉरिटी सेशंस जो हैं वो डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर नीलम देंगे, बिकॉज दे हैव डन MRCOG. और इसके बाद बाकी बातें मैं आफ्टर सेशन बताती हूँ. तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है स्मॉल पार्ट जेस्टेशनल एज. सो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स. एज आई एम टीचिंग FCPS तो थोड़ा बहुत तो मिलता ही है MRCOG से. तो मुझे अंदाजा है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं. एक तो डेफिनेशन में फंस जाते हैं, IUGR, एज एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, FGR, कुछ नई टर्म्स हैं, कुछ पुरानी टर्म्स हैं, कांस्टिट्यूशनल डिलेज. तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगी बिफोर दिस डॉक्टर नीलम अपना सेशन कंटिन्यू करें. ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो, क्या बेसिक्स हैं IUGR के. तो इजाजत है डॉक्टर नीलम? जी जी यस डॉक्टर हेरा. ओके, सो परवीन कंटिन्यू करें. Yes. Okay, चलिए. ऑडियंस यस. सो थोड़ी सी बेसिक चीजें. हाँ, तो एक तो ये इसके डेफिनेशंस का ही मसला रहता है. जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, जो RCOG की गाइडलाइंस हैं वो डिफरेंट हैं. बहुत सारी और चीज़ों में भी डिफरेंस है, लेकिन डेफिनेशन में भी डिफरेंसेस हैं. और जब आप बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट बुक से पढ़ते हो तो आप थोड़े उलझन में आ जाते हो ये क्या चल रहा है. तो इसलिए ये डेफिनेशन क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है. अमेरिकन कहते हैं ये जो FGR है ना, ये इसमें जो बच्चे का एस्टिमेटेड फीटल वेट है या एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है वो लेस देन 10th परसेंटाइल है फॉर दैट जेस्टेशनल एज. ठीक है. और SGA वो बोलते हैं कि ये एक पोस्ट नेटल डेफिनेशन है, मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद की. और अगर बच्चे का वेट अकॉर्डिंग टू हर एज या हिज एज लेस देन 10th परसेंटाइल है तो उसको बोलेंगे स्मॉल पार्ट जेस्टेशनल एज. ठीक है. तो दिस इज दिस इज बाय ACOG. बट RCOG में कुछ जो है और एक्सटेंशंस हैं. जैसे अकॉर्डिंग टू द RCOG जो SGA फिटस है वो जरूरी नहीं है पोस्ट नेटल डेफिनेशन हो. ठीक है. ये एस्टिमेटेड फीटल वेट या एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस इनसाइड इन यूट्रो भी अगर जेस्टेशनल एज के लिहाज से लेस देन 10 परसेंटाइल है AC या EFW तो ये SGA है. मतलब दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट के पोस्ट नेटली हम इस बच्चे को कहें. इनसाइड मदर वोम भी इसको SGA बोल देंगे. एक डिफरेंस. ठीक है. दूसरा ये कि RCOG ने सवेयर SGA को भी कैटेगराइज किया है. लेस देन 10th परसेंटाइल सारे SGAs हैं, बट सवेयर SGAs होंगे जो कि लेस देन 3rd परसेंटाइल है. ठीक है. अच्छा, ये जो SGAs है ना इसमें आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल बच्चे भी और ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड जो कि ट्रू जिनकी नेचर है ड्यू टू सम इन्फेक्शन या ड्यू टू सम मैटरनल फैक्टर्स या सम प्लेसेंटल फैक्टर्स. तो दोनों फैक्टर्स के साथ ही अगर बच्चे का एस्टिमेटेड फीटल वेट या एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस लेस देन 10th परसेंटाइल है तो दिस इज SGA. इट्स मीन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल बच्चे भी आएंगे. ठीक है. तो वो SGAs जिनमें पैथोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन होगी उनको बोलेंगे फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. तो आई थिंक सो RCOG गाइडलाइंस काफी कम्पैक्ट है हियर. चलें. तो एक तो हमने SGA
और सिवियर एसजी की डेफिनेशंस पढ़ी, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ा। फिर ये एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज बच्चे क्या होते हैं। तो हेलो आयमा, आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर वॉइस में कोई भी इशू है ना, प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहे, मतलब बजाय इसके कि आप खुद को अनम्यूट कर दें और पीछे का भी बैकग्राउंड नॉइस दिया है। ठीक है, चलो आयमा आपका माइक कनेक्ट नहीं है, प्लीज बता। तो एनीवे, जो अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज बच्चे होती हैं वो सारे होंगे जो कि 10th परसेंटाइल से ज्यादा होंगे और 90th से कम होंगे। तो बिटवीन दीज जो कि 20th है, 30th है, 40th है, 50th है, 60th है, 70th है, 80th है, टिल 90th, ये सारे अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, दे आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर जेस्टेशनल एज। तो ये टर्म्स जो कि एंड तक बच्चों को ना कंफ्यूज करती हैं। तो इट्स मीन हमने देखा कि एस जी ए लेस देन 10th परसेंटाइल है। ठीक है, बट वो एस जी ए जिसमें कोई पैथोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, वो ट्रू एस जी ए हैं। बट वो एस जी ए जिसमें डॉपलर प्रॉब्लम है या पैथोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन है या सवेयर उनके जो है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेस देन 10th, लेस देन 3rd परसेंटाइल या एसी लेस देन 3rd परसेंटाइल है, तो वो सारे एफ जी आर है। मतलब जो भी सवेयर एस जी है वो है ही एफ जी आर। ठीक है, और बाकी जो नॉन सवेयर एस जी एस हैं, अगर उनमें डोपलर प्रॉब्लम्स है, वो भी एफ जी आर है। ठीक है, यहाँ इस चीज को मैं दोबारा दूसरी स्लाइड से क्लियर करती हूँ कि सी एप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज बच्चे कौन से हैं जो कि 10th से 90th तक हैं। फिर स्मॉल कौन होंगे, जो ऑब्वियसली लेस देन 10th होंगे। बट स्मॉल में जो है एफ जी आर भी आएंगे और स्मॉल में कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल बच्चे भी आएंगे। ठीक है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में एक तो ट्रू एफ जी आर है जिनमें पैथोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन है, दूसरे वो हैं जिनके अम्मा अब्बा ही छोटे थे तो वो भी छोटे हो गए, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल। दोनों ही एस जी है क्योंकि दोनों का ही बर्थ वेट लेस देन 10th परसेंटाइल बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो एस जी ए वी विल सी टू पैटर्न्स, एफ जी आर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल। ठीक है, सो यस, तो इट्स मीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल फीटस बच्चे हैं तो वो दे आर लेस देन उनका 10th परसेंटाइल है तो वेट, लेकिन उनका ग्रोथ पैटर्न ठीक है। ठीक है, दे आर ग्रोइंग स्लाइटली एज कम्पेयर टू अदर एज में बच्चे जो हैं उनका ग्रोथ पैटर्न कम है, बट टेंडेंसी उनकी चल रही है, स्टैटिक नहीं है। और दूसरा ये कि उनमें कोई पैथोलॉजिकल इवेंट नहीं है तो उनके डॉपलर भी ठीक है, और जो उनके पैथोलॉजिकल इवेंट्स नहीं है तो लाइकर भी ठीक है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जब आप EMQ सॉल्व करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिर फंस जाते हो। तो हियर आई विल गिव यू अनदर टिप कि EMQs में ये चीजें मैटर करती हैं, इसके अलावा डॉपलर फाइंडिंग्स मैटर करती हैं। इसके अलावा मैटर करेगा कि स्टीरॉइड कब देना है, व्हेन इट इज व्हेन यू शुड ऑफर, व्हेन यू शुड कंसीडर, और व्हेन यू शुड गो स्ट्रेट फॉरवर्डली जब आपने सेक्शन करना है। ठीक है, 37 पे वो कौन से IUGR या FGR हैं जो डिलीवर करने ही करने रिकमेंडेड है डिलीवरी, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें हम मे बी वी विल कंसीडर कि मे बी 38 39 पे ले जाए इफ एवरीथिंग इज ओके एंड दे आर स्टिल IUGR बट डॉपलर्स उनके ठीक है, या उनके जो टाइम ऑफ डिलीवरी करने वाले पैरामीटर्स है अगर वो ठीक आते हैं। तो यही आपके बज़वर्ड मिलते हैं। तो अगर ड्यूरिंग while you will be reading this guideline, तो प्लीज इन छोटी छोटी बातों को आपने जरूर देखना है और यहीं से आपके EMQs या सिंगल बेस्ट आंसर बनेंगे। ठीक है, सो बिल्कुल बेसिक सी बातें मैं बता रही हूँ। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की कॉलेज की ग्रीन टर्म गाइडलाइन की अपनी बड़ी खूबसूरत सी एक टेबल है माइनर और मेजर की, वो तो करनी ही है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो FGR है उसमें रीजंस मैटरनल है या प्लेसेंटल है या फीटल है। और मैटरनल में मेल न्यूट्रिशन है, मैटरनल स्मोकिंग है, सब्सटेंस अब्यूज है, डायबिटीज है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, या प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें माँ की अपनी भी हिस्ट्री आ जाएगी और फादर की भी आ जाएगी। प्लेसेंटल फैक्टर्स में अगेन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, CKDs, प्रीवियस या उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं, कार्ड प्रॉब्लम्स हैं, प्रोलॉन्ग जेस्टेशनल एजेस हैं, पोस्टम्स जो हैं या प्रीक्लेम्शियाज ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। और जो फीटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें ट्विंस आ जाएंगे, इन्फेक्शंस आ जाएंगे या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स में से कुछ होंगे बड़े जिसमें तो हमने थक से जाना है और 20
628 से ऑनवर्ड करनी ही करनी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। कुछ माइनर होंगे कि हम थोड़ा स्टॉप करेंगे 20 वीक्स पे और देखेंगे कि भाई व्हाट सेज यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, फिर डिसीजन लेंगे कि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर ठीक है तो भाई सीरियल नहीं कराएंगे, और अगर वो भी खराब है तो फिर करा लेंगे सीरियल। तो ये हम माइनर में देखेंगे। अच्छा, आईयूजीआर की 2 टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिकल जिसमें सर और पेट एक जैसा होता है, AC और HC, और जो होते हैं एसिमेट्रिकल, उनमें जो है डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो टाइप 1 सिमेट्रिकल होते हैं और टाइप 2 बस आप देखो आगे डॉक्टर नीलम भी बताएंगे कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं। यूजुअली दोनों में मिक्स काजेज आती है, मतलब पहले इवन प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में भी पहले सिमेट्रिकल चलता है प्रॉब्लम, फिर बाद में जाके एसिमेट्री आ जाती है अगर कंपनसेशन नहीं होती। बट कहा यह जाता है, कंसिडर ये किया जाता है कि जो सिमेट्रिकल है ये यूजली ड्यू टू टॉर्च इन्फेक्शन, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, इन चीज़ों की वजह से होते हैं और थोड़े अर्ली होते हैं, और एसिमेट्रिकल थोड़े लेट होते हैं, और इनमें जो मेजर रीजन होती हैं वो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है। ओके, सो जो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, इसमें ऐसे नहीं एकदम से हो जाता कि आप रात को सोए और सुबह IUGR हो गया। एक कंपनसेशन फेज चलती है, ठीक है, उसकी अपने पैटर्न आते हैं, फिर एक डिकम्पनसेशन फेज चलती है, और फाइनली उसके बाद तो फिर IUD है। तो डिकम्पनसेशन फेज में क्या होता है, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, और डायस्टोलिक फ्लोज खराब होने लग जाते हैं, एब्सेंट या रिवर्स, और फाइनली डेथ, और CTG पे भी जो है एक्यूट इवेंट्स आ जाते हैं। तो कंपनसेशन फेज में जो है इट टेक्स रियली टाइम, वीक्स एंड डेज लग जाते हैं। डिकम्पनसेशन फेज पे बड़ी क्विक हो जाती है, विद इन आवर्स IUDs हो जाती है। डिकम्पनसेशन फेज जब आपको बोला जाए अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एब्सेंट या रिवर्सल, ठीक है, या डक्टस विनोसिस जो है उसका खराब हो रहा है, तो ये डिकम्पनसेशन फेजेस चल रही होती है, इससे पहले की सारी कंपनसेशन फेजेस। ठीक है, ओके, सो तो ये थोड़ा सा बेसिक था अबाउट IUGR। अब हम पढ़ते हैं फीटल मेडिसिन की गाइडलाइन, फीटल मेडिसिन मॉड्यूल में स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज की प्रिंट अप गाइडलाइन नंबर 31। सो नीलम, आप अपने शेयर कर लें PPT। मैं आपको होस्ट बना दूँ। यहाँ तक क्लियर था, कोई इशू? मतलब अभी तो खैर मैंने थोड़ा सा इंट्रो ही हमने किया है, तो अभी डिटेल में डॉक्टर नीलम आपको बताएंगी। ओके, परवीन क्लियर है। मैडम इस कोड आप डॉक्टर नीलम जाहिर को होस्ट बना दें। Hello, I'm Dr. Neelam Zahir. Today we'll be discussing about the small for gestation age and the fetal growth restriction. As Dr. Hera has already explained these slides very beautifully and gave the reference of SUG as well as the RCUG guidelines. So just a quick revision for those who have joined us recently, that small for gestation age, that is the fetuses
So it is defined as the estimated fetal weight or abdominal circumference less than 10 centile for a gestational age, that is called small for gestation age fetus. Now here the RCUG guidelines is further categorized it into severe small for gestation age, when the estimated fetal weight or abdominal circumference this is less than 3rd centile. Now, apart from this, the other terminology that we'll be using very commonly, that is the fetal growth restriction. So every small for gestation age fetus is not having this fetal growth restriction. So why? Because some of the small for gestation fetuses are constitutionally small, means their parents' build are small, mother or the father build is small. For that reason, these fetuses are small, but they are growing well. Well, if you see the definition of fetal growth restriction, so that is a pathological restriction. Means if you follow these babies will not be growing properly. So this is something which is a pathological restriction. Now, the Dr. Hera already has explained these slides very well, that these constituted small fetuses have normal growth curve, they have normal umbilical artery Doppler, and they have normal amniotic fluid volume. Now, she already has explained this slide that the causes of fetal growth restriction is divided into maternal, placental, and the fetal causes. Now, the type of the fetal growth restriction babies divided into symmetrical and asymmetrical. As she already had explained this very well, so I am just going it through quickly. Now, small for gestation age fetuses, we have met this guideline from the RCUG, small for gestation age, and we will be discussing about the definition, the etiology, what are the risk factors, when we are going to deliver such babies, and how we are going to deliver. Now, again, a quick revision for the definition. When the estimated fetal weight is less than 10 centile, this is small for gestation age. When it is less than 3rd centile, this is severe small for gestation age. Now, please note severe small for gestation age, because in the coming slides, we will be discussing the various investigation that is specific for this small for gestation age. So you must know that what is small for gestation age fetus when the abdominal circumference or estimated fetal weight is less than the 3rd centile. Now, fetal growth restriction that is not synonymous with small for gestation age. Some but not all growth restricted infants and fetuses are small for gestational age, while 50 to 70% of the SGA are constitutionally small. It means their growth is appropriate for the maternal size and ethnicity. Now, fetal growth restriction, this implies a pathological restriction of the growth potential. And these fetuses manifest the evidence of fetal compromise, like abnormal Doppler indices and reduced Likert volume. Now, this is another definition that is commonly used, the low birth weight babies. And this is the WHO definition that the low birth weight, it refers to an infant with a birth weight less than 2.5 grams. Now, please note that in this definition that WHO have not mentioned the gestational age. So if, for example, we have a baby born at 40 weeks with a birth weight less than 2.5 gram, but for example, we have a baby born at 33, 34 weeks with a birth weight of 2.2 kg. So for this baby, the 2.2 kg birth weight is okay according to the gestation.
For a baby at 40 weeks with a weight of 2.4 kg, this is low birth weight. But for a baby at 33 or 34 weeks with a birth weight of 2.4 or 2.3, this is low birth weight. But here, WHO did not mention about the gestational age. So for that reason, an SGA will be using the customized chart that properly mention the gestational age. Now this is the charts that is used for the gestation age. If the birth weight is less than 10 centile, we'll be plotting the estimated fetal weight and the abdominal circumference on these charts. And if the value is below 10 centile, if values come under this graph, so it means this is small for gestation age. If the value is between 10 and 89 centile between this, so this means this is appropriate for gestational age. The baby is growing well. But if the baby is more than 90th centile, then this is large for gestational age. Now, here are the types of the IUGR, which Dr. Hira had explained. The normal, the symmetrical IUGR and the asymmetrical IUGR. So in the symmetrical IUGR, both the head and the abdomen, both will be small. This is the symmetrical IUGR. While asymmetrical fetal growth restriction, abdomen is small and the head is normal. Now, how these phenomena occur, we will discuss this in the coming slides. Now, symmetrical IUGR, this is an insult that has occurred early in the antenatal period during the period of organ growth. So, if intra-fetal growth restriction occur at earlier gestation, this will result in symmetrical IUGR, where both abdomen and head will be small. The common associated condition are congenital and chromosomal abnormalities, intrauterine infections, and environmental factor, usually the cause of symmetrical IUGR. Now, this is the asymmetrical IUGR. The fetus responds to inadequate supply of nutrition by redistribution of the blood flow. So when the blood supply to the fetus is compromised, the fetal adopts certain compensatory mechanism. And this compensatory mechanism, more blood is directed to the brain, heart, and adrenal gland, and less amount of blood goes to the liver and kidneys. And this is the reason that the fetal urine production decreases and the fetus develop oligohydramnias. So this is the abdominal girth and the fat stores are reduced more than the head. This phenomena is called brain sparing effect. This brain sparing effect will develop usually an asymmetrical IUGR, and the reason is preeclampsia, idiopathic fetal growth restriction, sometimes associated with essential hypertension or maternal smoking. So this is the late onset IUGR, and in asymmetrical IUGR, there is brain sparing effect. The brain is spared and there is less blood flow to the liver and kidneys. So this is called asymmetrical IUGR or late onset IUGR. So further categorized into the early onset IUGR, which is before 32 weeks of gestation, or symmetrical fetal growth restriction, identified at any gestation and suggests the possibility of congenital infection or chromosomal abnormality. Late onset IUGR after 32 weeks of gestation, antenatal management will involve increased fetal surveillance and delivery if there is any evidence of acute or chronic fetal compromise. Now, these are the small fetuses which are divided into constitutionally small. Non-placental mediated growth restriction means placenta is not involved. Placenta is functioning normally, it is okay. And the examples are
chromosomal abnormalities, and some inborn error of metabolism. Fetal infections like CMV infection, torch infection cause fetal growth restriction. Placental mediated growth restriction like the one caused by the hypertension. Fetal growth restriction should only be used for fetuses with definitive evidence of growth has faltered, means the growth has slower down. Now, growth is a dynamic process of change of size over time, and therefore it should only be assessed by serial observation. Means you are following the baby through the ultrasound scan and you will be seeing that there will be no change in the estimated fetal weight or abdominal circumference. Means the growth is restricted or stopped. Now, any woman who previously had a small for gestation age neonate, this time twofold increased risk of subsequent SGA. Now, what are the first trimester and the second and third trimester screening tests by which we can predict that this baby will be developing small for gestation age? So, in the first and second trimester, we'll be using the medical and obstetrical history. We will be taking detailed history and we will try to identify the risk factor, maternal risk factors, which can increase small for gestation age risk. Examination, it can be done through symphysiofundal height, it can be done through abdominal palpation, and maternal serum screening test. There are certain maternal serum screening tests, which although we did it for some other indication, but if the value is found high, increase the risk of small for gestation age, and we definitely do the uterine artery Doppler. So in the first and second trimester, it is the history, examination, screening test, and the uterine artery Doppler. And in the second and third trimester, it is the abdominal palpation and measuring of the symphysiofundal height, including the customized chart. Now, please note this point that for this reason, we'll be using the customized chart, we're not using the population-based chart. So what are these customized charts? It is coming in the slides. Now, the first thing we're going to discuss about the history, the booking assessment. We have a patient, we will assess all this risk factor of small for gestation age. First, we will discuss the minor risk factor and then the major risk factor. So this is the history. So for the minor risk factor, total 10 minor risk factors. And in these total 10, if we found 3 or more, so it means the baby is at higher risk for small for gestation. The first thing is the maternal age, more than or equal to 35 years. If the mother is more than or she is equal to 35 years of age, this is a minor risk factor. If it is an IVF pregnancy, she conceived through IVF, again, this is a minor risk factor. Nulliparity, minor risk factor. BMI less than 20, BMI 25 to 34.9, again, a risk factor. Smoking, 1 to 10 cigarettes per day, risk factor. Low fluid intake pre-pregnancy, again, risk factor. Previous pre-eclampsia, a risk factor. Pregnancy interval less than 6 months or more than equal to 60 months means 5 years, again, is a risk factor. So these are the minor risk factor. This is the maternal age. Pregnancy, whether spontaneous or through IVF, definitely ask about this. Smoking, previous history, it is a history of pre-eclampsia. And this is the pregnancy interval history. And on examination, the BMI is important. Less than 20, 25 to 34.9, these are the minor risk factors. So if there are 3 or more risk factors, remember 3 or more, what we will do,
We take the history and we identify that this mother is having 3 or more risk factors. Second option is we will do the uterine artery Doppler. Make sure this is the uterine artery Doppler, not the umbilical artery Doppler. At 20 to 24 weeks, we will be doing the uterine artery Doppler. We want to know the blood supply to the uterine arteries. Now, once we did this investigation, we have 2 possibilities. Either this will be normal or this will be abnormal. So if this is normal and the mother is having risk factor, the uterine artery Doppler is normal. What we will do still in the 3rd trimester, we will do an ultrasound scan for the fetal size and the umbilical artery Doppler. So note this point that even if the uterine artery Doppler is normal, but the mother is having risk factors, we will do in the 3rd trimester ultrasound scan for the size and the umbilical artery Doppler. If it is abnormal, you did the uterine artery Doppler and this is abnormal. So what is this abnormal Doppler? We will discuss in the coming slides. In this case, we'll be doing serial assessments. Serial assessment, and that will be started from 26 weeks of gestation. 26 to 28 weeks, we will ask the patient to come for regular follow-up. We will do serial scans, and in these scans, we will check the growth, that is the estimated fetal weight, and abdominal circumference. We will be checking whether there is any change, and this abdominal circumference are estimated fetal weight or not. And along with this, we will do the umbilical artery Doppler. Now, this pathway is for those who are having the minor risk factors. Now, the major risk factor. For this major risk factor, we only need a single factor. Single factor is present, we will go for the serial assessment. So what are these factors if the age is 40 years? So if you have an SBA about this small for gestation, you should keep this point in the mind that maternal age is a key word. Maternal age can be a key word in SBAs if it is from small for gestation, because this is the major risk factor. It is included in both minor and major factors. If she is a smoker, more than 11 cigarettes per day, this is a major factor. Paternal or maternal SGA. Kindly note this down. If the mother and the father, these are itself small for gestation, so this is a major factor. The child is at more risk of small for gestation. Cocaine, daily vigorous exercises, previous stillbirth, chronic hypertension, diabetes with vascular disease, renal impairment, antiphospholipid syndrome, heavy bleeding similar to the menses, and pregnancy-associated plasma protein A. Now we discuss about the screening test. So this is the screening test. If pregnancy-associated plasma protein A level is less than 0.4 mom, so this child, baby, is at increased risk of small for gestation. And any single risk factor in this table, we'll be doing serial assessment starting from 26 to 28 weeks. And this will include the growth scans and the umbilical artery Doppler. Now just see the minor risk factor, we need 3 or more. Major risk factor, we just need a single factor. Pregnancy-associated plasma protein less than 0.4, it is a major risk factor. Fetal echogenic bowel, if detected on ultrasound scan, this is a major risk factor. Now, in SBA MCQ, if these things are noticed, given, so it means that these are the keywords. Any of these factors will be doing serial assessment of the fetal size and umbilical artery Doppler, starting from 26 to 28 weeks. Now, sometime in question, they may give you the minor as well as the major risk factor. So if any of the major risk factor is given, we will ignore the minor risk factor.
We will just consider the major risk factor and we will go for the serial assessment of the fetal size and umbilical artery Doppler. Now again, reassessment during the third trimester. During the third trimester, if the mother develops severe pregnancy-induced hypertension, if she develops preeclampsia and unexplained APH abruption, we will go for the serial assessment of the fetal size and umbilical artery Doppler. So these are the specific factors if developed in the third trimester. Again, we will be doing the serial assessment. Now, this is a small slide. Women who are unsuitable for monitoring of growth by symphysiofundal height. She is having large fibroid. Her BMI is more than 35. She is having polyhydramnias. And it's difficult for us to check the symphysiofundal height because of these factors. We will be doing serial assessment of the fetal size and umbilical artery Doppler. So if you find difficulty in checking the symphysiofundal height measurement, we will be going through this pathway. We'll be doing the serial assessment of the fetal size and umbilical artery Dopplers. Now, uterine artery Doppler has a value in high risk population, means people who are having the risk factors. Uterine artery Doppler at 20 to 24 weeks of gestation has a moderate predictive value for severely SGA neonate. Any woman with abnormal uterine artery Doppler at 20 to 24 weeks of pregnancy, subsequent normalization of flow velocity indices is still associated with increased risk of SGA. So repeat uterine artery Doppler is therefore of limited value. So if initially the uterine artery Doppler is abnormal and later it becomes normal, still the baby is at increased risk of small for gestation age. So repeat uterine artery Doppler is therefore having no role. So woman with abnormal uterine artery Doppler at 20 to 24 weeks. Now, what is abnormal uterine artery Doppler? Sometimes they give you these values. Sometimes they does not mention you that the uterine artery Doppler is abnormal. They can give that the uterine artery pulsatility index is more than 95th centile. So you should know that what abnormal uterine artery Doppler means. So when the pulsatility index is more than 95th centile or whenever there is notching, so that baby should be fetus should be referred for serial ultrasound assessment of the fetal size and fetal well-being. Women with normal uterine artery Doppler do not require serial assessment of the fetal size. These women required assessment in the third trimester by doing the growth scan, that is checking the estimated fetal weight and doing the umbilical artery Doppler. Now this is the abnormal uterine artery Doppler. This is the normal one. You can see this is the normal uterine artery Doppler. And this is the abnormal uterine artery Doppler. You can see the notch. And normal Doppler, you can see there is no notch. So what happened? An abnormal Doppler, you can see the notch over here. This is abnormal uterine artery Doppler. So woman with abnormal uterine artery Doppler. So what is abnormal? When the pulsatility index is more than 95th centile and when there is notching, we should refer for serial assessment of the fetal size and fetal well-being at 26 to 28 weeks of pregnancy. Now about the clinical examination. So abdominal clinical examination, it can be through abdominal palpation and it can be through symphysiofundal height measurement. So abdominal palpation has a limited accuracy for the production of SGA neonate, and this is not routinely performed. Serial assessment measurement of symphysiofundal height is recommended at each antenatal appointment starting from 24 weeks of pregnancy. You can see symphysiofundal height measurement is starting from 24 weeks of pregnancy
and it improves the production of SGA neonates. We will check the symphysiofundal height and we will plot this on customized chart. We're not going to use the population-based chart. We'll be using the customized chart and we'll be plotting this symphysiofundal height on this chart, and it can detect 36% of the small for gestation age fetuses. Symphysiofundal height should be plotted on customized chart rather than a population-based chart because this improves the production of SGA neonate. So women with single symphysiofundal height plots below the 10th centile, a serial measurement demonstrates slow or static growth by crossing the centile should be referred for ultrasound measurement of fetal size. Now this can come in the MCQ that the midwife has plotted the symphysiofundal height on the customized chart and the value is below 10 centile. So what will be the next step? So this is through examination they have detected the small for gestation age. Now we will be doing the ultrasound scan. And the ultrasound, we will be checking the estimated fetal weight and the abdominal circumference. So now if she has plotted the symphysiofundal height on the customized chart and it is shown that the growth is slow or static. So again, you will refer the baby, the fetus, for the ultrasound measurement to check the abdominal circumference or the estimated fetal weight. Women in whom measurement of symphysiofundal height is inaccurate, for example, with a BMI more than 35, large fibroid or hydramnios, should be referred for serial assessment of the fetal size using ultrasound. Fundal height should be measured from the fundus, which is variable point, to the symphysis pubis, which is the fixed point. The centimeter value is hidden from the examiner. And the measurement should be plotted on customized centile charts. Now, this is the customized centile charts, and why it is called customized? Because it includes maternal height, maternal weight, ethnic origin, and parity. If you notice, some of the ethnic origin babies are already small for gestation, like Chinese, like some Asian babies. So the population-based chart is for the whole population, but in the customized chart, they include these specific parameters. They include maternal height, maternal weight, maternal ethnic origin, and parity. So this is called a customized chart because it is include all these parameters. This is the 10th centile, this is the 50th, and this is the 90th centile. So if the growth, baby growth is between these lines, so it means it is okay. If it is below the 10th centile, then you will refer the mother for the ultrasound scan to check the estimated fetal weight and abdominal circumference. This is another example of the customized growth chart. This is the detail of the mother. And this is the customized growth chart. Now, what is the optimal method to diagnose small for gestation age? So it is the fetal abdominal circumference and the estimated fetal weight. If it is less than 10 centile, it is used to diagnose SGA. Where the fetal abdominal circumference or estimated fetal weight is less than 10 centile and there is evidence of reduced growth velocity, the woman should be referred to serial assessment of fetus size and umbilical artery Doppler. So first, you will check the estimated fetal weight and abdominal circumference. If it is less than 10, you will refer the fetus, for the serial assessment of fetus size and Doppler. When using two measurement of abdominal circumference and estimated fetal weight to estimate the growth velocity, they should be at least 3 weeks apart to minimize the false positive rates for diagnosis fetal growth restriction. So if you are doing serial growth assessment, you will check abdominal circumference and estimated fetal weight. After 3 weeks time, you will see if there is any change in this abdominal circumference and estimated fetal weight or not. So minimum 3 weeks are required to exclude the false positive rates. More frequent measurement of fetal size may be appropriate when the birth weight prediction is relevant outside the context of diagnosis small for gestation age
and fetal growth restriction. So this is the benefit of customized fetal weight reference. It improves the prediction of small for gestation age. So what is the benefit of customized chart? It improves the prediction of small for gestation age neonate and also the adverse perinatal outcomes. And women having serial assessment of the fetus size, use of customized fetal weight chart may improve the prediction of normal perinatal outcome. Routine measurement of abdominal circumference and estimated fetal weight in third trimester, it does not reduce the incidence of SGA neonate. So routinely, abdominal circumference and estimated fetal weight checking in the third trimester is not recommended. Routine fetal biometry is also not justified. Change in abdominal circumference or estimated fetal weight improve the prediction of wasting at birth. Neonatal morphometric indicators. And with this, they check the arm circumference and adverse perinatal outcomes suggestive of fetal growth restriction. Now, this is a very important slide for exam. What are the investigation that is required for SGA fetuses? Now, investigation that is required that is specifically for severe SGA. Now, kindly note that these investigations are not for SGA. These investigations are for severe SGA when the birth weight is less than third centile. When the estimated fetal weight or abdominal circumference is less than third centile. Only then you can offer these investigations. For simple SGA, you cannot do these investigations. So for severe SGA, karyotyping is indicated. So what are the two conditions in which karyotyping is indicated? If it is severe SGA with structure abnormalities, you will do the karyotyping. If there is severe SGA before 23 weeks of gestation and the uterine artery Doppler is normal, you will do the karyotyping because of high risk of underlying chromosomal abnormalities. So for severe SGA, karyotyping is indicated in two conditions. If it is SGA with structure abnormalities and if it is SGA before 23 weeks and the uterine artery Doppler is normal. Now, serological screening for CMV and toxoplasma infection. Severe SGA, you will do these two investigations, karyotyping and screening for CMV and toxoplasma infection. Now, severe SGA 18 to 20 weeks anomaly scan, you refer the patient and the radiologist told you that it is severe SGA. So you will refer the mother straight away to the fetal medicine specialist. The first step will be a referral to the fetal medicine specialist. If it in 18 to 20 week scan, it is identified as severe SGA, your first step will be referral to the fetal medicine specialist for a detailed anatomical survey. Testing for syphilis and malaria should be considered in high-risk population, for example, those who have traveled to the endemic areas. So these are the important percentages. Severe SGA, incidence of chromosomal abnormality is 19%, very high. For that reason, karyotyping is indicated. If the SGA is detected before 26 weeks of gestation, it is a triploidy, which is the most common. And if it is after 26 weeks, it is a trisomy 18, which is the most common. So kindly note the time duration, weeks of gestation. Before 26 weeks, it is a triploidy, and after 26 weeks, it is the trisomy 18. Fetal infections are responsible for 5% of the cases. And the most common pathogen reported are CMV infection, toxoplasma, malaria, and syphilis. Although a recent multicentric study found no association between congenital toxoplasma and the incidence of small for gestation age infant. Malaria is a significant cause of preterm birth and low birth weight worldwide and should be considered in those from or who have traveled into the endemic areas.
So what intervention should be considered for the prevention of SGA fetus and neonates? Antiplatelets agent may be effective in preventing SGA birth and women at high risk of preeclampsia. So kindly note the role of aspirin and a small for gestation age. It is only indicated in those women who are at high risk of preeclampsia, but the effect size is very small. You cannot give the aspirin in all cases of small for gestation age. You will only give the aspirin in small for gestation age whenever their mother is high risk of preeclampsia. And we are going to start it before 16 weeks of pregnancy. We are starting the antiplatelet agent. It must be started before 16 weeks of pregnancy. Why? Before the trophoblastic invasion, the waves of trophoblastic invasion takes place. So for that reason, it should be started before 16 weeks of the pregnancy. There is no clear evidence that dietary modification, progesterone, or calcium prevent the birth of SGA infant. Intervention to promote smoking cessation may prevent the delivery of a SGA neonate. And the antithrombotic therapy, heparin, that is appears to be promising therapy for the prevention of SGA in high-risk women, but there is insufficient evidence to recommend it. So the only role, prophylactic role, is that of aspirin for small for gestation age and in those cases who are at risk of preeclampsia. Now, what intervention should we consider for a small for gestation age? There is no routine intervention required. You can only offer the steroid, which is 24 to 35 plus 6. So kindly note it down that for fetal growth restriction, a small for gestation age, you can give these steroids between 24 to 35 plus 6. This is the cutoff value, where a cutoff gestation age, where we can give the steroids. Now, what is the optimal method? So it is the umbilical artery Doppler in high-risk population. The use of umbilical artery Doppler has been shown to reduce perinatal morbidity and mortality. So kindly note that in high-risk population, umbilical artery Doppler reduce the perinatal morbidity and mortality. And the umbilical artery Doppler should be the primary surveillance tool in the SGA fetuses. Cardiac tachography should not be used routinely as the only form of surveillance. Interpretation should be based on short-term fetal heart rate variation from computerized analysis. So for small for gestation age, it is the computerized CTG that is important, computerized CTG, and in their CTG, you will note the short-term fetal heart rate variations. So you cannot use CTG alone for the surveillance form for the SGA. You can use it in combination with the other investigations. Amniotic fluid volume should not be used as the only form of surveillance. An interpretation of the amniotic fluid volume should be based on single deepest vertical pocket. Now this is the umbilical artery Doppler studies. This is systolic flow and this is the diastolic flow. You can see here, this is the systolic flow and the diastolic flow is reduced. You can easily compare it here and here. The diastolic flow is reduced and here the diastolic flow is reversed. So this is the umbilical Doppler and the interpretation of the umbilical artery Doppler. Biophysical profile should not be used for fetal surveillance and preterm small for gestation age fetuses. Middle cerebral artery Doppler in preterm small for gestation age fetus. It is a limited accuracy to predict acidemia and adverse outcome, and it should not be used to time delivery. So remember, in preterm SGA, we cannot use the middle cerebral artery Doppler because it is a limited accuracy. And the term SGA with normal umbilical artery Doppler and abnormal middle cerebral artery Doppler
has a moderate predictive value for acidosis at birth. So if you simplify it, you can use the middle cerebral artery Doppler for a term SGA, but you cannot use it for a preterm SGA because it has a limited accuracy. While in term SGA, it has a moderate predictive value for acidosis. So middle cerebral artery Doppler, it should be used for a term SGA, and the middle cerebral artery percentility index is less than 5th centile. So it is a moderate predictive value and should be used to time delivery. Middle cerebral artery Doppler may be most useful test in SGA fetuses detect after 32 weeks of gestation, where umbilical artery Doppler is typically normal. Now they miss the middle cerebral artery Doppler. With hypoxia, there is reduced resistance and there is increased diastolic flow, which decrease the percentility index. Note this point that a middle cerebral artery Doppler, whenever there is hypoxia, there is reduced resistance because hypoxia, more blood is directed toward the brain. So the resistance in the brain vessel is reduced and the diastolic flow is increased. That is the reason that the percentility index is reduced and the middle cerebral artery Doppler. So reduced middle cerebral artery Doppler percentility index and umbilical artery percentility index, this is the cerebroplacental ratio, and this is an early sign of the fetal hypoxia. So whenever middle cerebral artery Doppler percentility index and umbilical artery Doppler percentility index is reduced, this is the cerebroplacental ratio, as in this is an early sign of the fetal hypoxia. This is the middle cerebral artery Doppler. This is the normal one. Now this is the shows increased diastolic flow with the possible redistribution of blood. This is the abnormal one. You can see the diastolic flow over here, very small. You can see it over here, it is increased. So the blood flow during diastole is increased. Because of this reason, the percentility index is decreased. Now the ductus vinosis and the umbilical vein Doppler. Ductus vinosis Doppler has a moderate predictive value for acidemia and adverse outcome. Ductus vinosis Doppler should be used for surveillance and preterm small for gestation age with abnormal umbilical artery Doppler. The ductus vinosis Doppler flow velocity pattern reflects atrial pressure volume changes during the cardiac cycle. As the fetal growth worsens, the velocity reduces and the ductus vinosis A wave owing to the increase after load and preload, resulting from the direct effect of hypoxia. Retrograde air wave and pulsatile flow and the umbilical vein signifies the onset of overt fetal cardiac compromise. Now this is the normal changes, reduced in diastolic flow absent, and these are the reverse. This is the ductus vinosis Doppler. We have three waves. This is the systole, this is the diastole, and this is the air wave. So what happened? That in ductus vinosis Doppler, there occur reversal of this air wave. Retrograde air wave or reversal of air wave. You can see here systolic more and diastolic is less. Here you can see both are of almost the same length. Systolic and diastolic both are of the same length and the air wave is reduced. These are the pathological findings in ductus vinosis Doppler. Fetal growth restriction velocity reduces and the ductus vinosis, there will be retrograde air wave, and in the umbilical vein, there will be pulsatile flow, which shows that there is fetal cardiac compromise. It started now. Now, what is the optimal gestation to deliver the small for gestation age fetus? So if there is absent and reverse end diastolic flow detected prior to 32 weeks of gestation, we will do the ductus vinosis Doppler. Remember, umbilical artery Doppler is abnormal. We are not going to deliver the baby. We'll be doing the ductus vinosis Doppler. If the ductus vinosis Doppler is abnormal,
there is UV pulsation in the umbilical vein, we will give steroids and we will deliver, ideally by cesarean section. Here, we will make sure that the baby is more than 24 weeks of the pregnancy and the weight is more than 500 grams. Now, if the absent and reverse end diastolic flow is detected prior to 32 weeks and the ductus vinosus Doppler is abnormal, we will recommend delivery around 32 weeks and consider it between 30 to 32 weeks. So if it is detected before 32 weeks, we will do the ductus vinosus Doppler. It is abnormal, we will give steroids and we will consider for delivery, provided that the gestation age is more than 24 weeks and the baby weight is more than 500 grams. But if it is prior to 32 weeks and ductus vinosus Doppler is normal, we can wait till 32 weeks or we can consider delivery between 30 to 32 weeks. Now, a small for gestation age fetus is detected after 32 weeks of gestation and umbilical artery Doppler studies are abnormal. Delivery should not be prolonged more than 37 weeks. It does not mean that we have to wait till 37 completed weeks, but it means that if it is detected after 32 weeks, we will not prolong the pregnancy for more than 37 weeks. And small for gestation after 32 weeks with normal umbilical artery Doppler, delivery should be around 37 weeks of gestation. Now, how we are going to deliver the small for gestation age fetus? Small for gestation age fetus with abnormal artery, absent or reverse end diastolic flow, cesarean section is the recommended. Small for gestation age fetus with normal artery or abnormal umbilical artery pulsatility index and the umbilical artery and diastolic velocities are present, means this is not absent or reverse. We can consider induction of labor, but with continuous electronic fetal heart rate monitoring. Early admission is recommended in women in spontaneous labor with small for gestation age fetus in order to instigate continuous electronic fetal heart rate monitoring. Now, this is a very important slide. Most of the time, MCQs can come from this. That is the symphysiofundal height. Kindly note, this is the symphysiofundal height. If it is less than 10 centile, are serial measurements indicative of fetal growth restriction. So what will be your next step? You will be doing an ultrasound scan for the abdominal circumference or estimated fetal weight. Now, if the history you identify the high risk factor, you will straight away do this abdominal circumference and estimated fetal weight. Now you do the umbilical artery Doppler studies. Umbilical artery Doppler studies are normal. You will repeat the ultrasound fortnightly. And fortnightly, what will we do? We will do the umbilical artery Doppler and we will consider the middle cerebral artery Doppler after 32 weeks. And we'll be checking the abdominal circumference and the estimated fetal weight. Now, if the umbilical artery Doppler pulsatility or resistivity index is more than 2 SDs and end diastolic velocities are present. So kindly note that umbilical artery Doppler, they will give you two possibilities. Either they will give that there are absent or reverse end diastolic flow, either they will give that end diastolic velocities are present. Now, the management for both of them is different. End diastolic velocity is present, pulsatility or resistivity index is more than 2 SDs. You will repeat the ultrasound weekly and you will do twice weekly. 2 times in a week, you will be repeating the umbilical artery Doppler. Now, if the absent and reverse end diastolic flow, the first important thing is refer to the fetal medicine specialist. Whenever there is absent and reverse and diastolic flow, kindly note that the first thing is these baby fetuses' mothers should be referred for a fetal medicine specialist opinion. Absent and reverse and diastolic flow, refer for fetal medicine specialist opinion. Repeat the ultrasound scan daily. Here we are repeating 2 times in a week. Here we will be repeating daily. Here we are repeating after 2 weeks. Here we are repeating 2 times in a week. Here this should be daily umbilical artery Doppler
daily ductus vinosis Doppler, and daily computerized CTG, and weekly abdominal circumference and estimated fetal weight. Now, if the baby is small for gestation age and the ultrasound is normal, the Doppler studies are normal, we should deliver by around 37 weeks with involvement of the senior clinician. Recommend delivery by 37 weeks if the middle artery Doppler persitivity index is less than 5th centile. Consider delivery if more than 34 weeks if static growth over 3 weeks. You check the abdominal circumference and estimated fetal weight weekly, and after 3 weeks' time, you notice that there is no change. There is no change in abdominal circumference and the estimated fetal weight. Means the growth is static. So you will consider delivery when the fetus is more than 34 weeks. Recommend steroids if delivery is by the RCUG guideline. Now, if only the umbilical artery Doppler study shows persitivity or resistivity index is present, increase, and end-diastolic velocity is present, we will recommend delivery by around 37 weeks. Consider steroid if delivery is by C-section, and consider delivery if more than 34 weeks and static growth over 3 weeks. So in 3 weeks' time, we check the abdominal circumference and estimated fetal weight, and there is no change. So you will recommend delivery by more than 34 weeks. So in both these two conditions, the delivery is around 37 weeks. But whenever there is absent and reverse diastolic flow, you will refer to the fetal medicine specialist, and you will be doing these investigations daily. And you will recommend delivery around 32 weeks after steroids. You will consider delivery before 32 weeks after steroids if the ductus vinosis Doppler is abnormal or computerized CTG is abnormal. Now, before 34 weeks, if the umbilical artery Doppler studies are abnormal, we are not going to decide. Before 34 weeks, we will do the ductus vinosis Doppler and the CTG. If these are abnormal and the baby weight is more than 500 grams and more than equal to 24 weeks, we will consider delivery by cesarean section. Now, delivery by 32 weeks after steroids. Consider delivery around 30 to 32 weeks, even when the ductus vinosis Doppler is normal. So, if it is absent or reverse in diastolic flow and the ductus vinosis Doppler is normal, we can consider delivery, recommend delivery by 32 weeks, and we can consider it between 30 to 32 weeks. So, in these conditions, we are not going to prolong the pregnancy for more than 32 weeks. We will decide it around 32 completed weeks of pregnancy. Now, this was the last slide. So, mode of delivery, Doppler indices abnormal, absent or reverse in diastolic flow cesarean section. Obstetrical indication, it should be elective cesarean section. IUGR plus abnormal Doppler in mother wish, it should be elective cesarean section. And if we do not have the facility for monitoring, so again, it should be by elective cesarean section. This was the last slide. Thank you so much. And before that, if you want to ask any question, so I'm ready to answer. जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सेशन था। आई डोंट थिंक सो कोई क्यूरी रहती भी है। तो समरीन, आसिया, परवीन एंड few Zoom users and few iPhones, हाँ कुछ रहता है, आ गया समझ में? अगर समझ आ गया तो फिर आपका एक क्विज है छोटा सा। स्टार्ट करें? ओके, वैसे मैं क्विज का इस सेशन में मूड नहीं था, लेकिन जैसे डॉक्टर नीलम पढ़ा रही थी तो मैं साथ साथ बना रही थी। तो आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। नीलम, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सेशन था, और आपके साथ ही मैंने कुछ क्विज बनाए हैं। अगर आप हाँ, तो आप चाहे तो मैं इनकी असेसमेंट कर लूँ, उनको आता भी है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। चले, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ना। तो अभी ये तो आपने पढ़ी है,
तो इसी से मैंने कुछ बनाया है अभी बैठे बैठे। तो देखो बच्चों, अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर अगर सही है, मतलब एसडी रेशियो <2 आ रही है ना, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये ठीक ही है ना। बट आईयूजीआर तो पक्का है। तो फिर क्या करना है आपने, आपने इस पेशेंट का हर 2 हफ्ते बाद करवाना है अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर। ठीक है, अभी आपने ये नहीं देखना, ये सारी बातें, जस्ट 1 मिनट। यस, अभी हम इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ये सारी बातें, ये बात। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ फोकस ऑन अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर है, आईयूजीआर बच्चा है, और डॉपलर ठीक आ रहा है, बट है तो आईयूजीआर <10th परसेंटाइल इसका एस्टिमेटेड फीटल वेट है, या इसका एब्डोमिनल सर्कम्फेरेंस है। छोड़ेंगे तो नहीं ना, मॉनिटरिंग तो करेंगे। तो इसकी जो डॉपलर करवाना है वो हर 2 हफ्ते बाद करवाना है, और इसका ग्रोथ स्कैन जिसमें एसी और एस्टिमेटेड फीटल वेट है वो भी हर 2 हफ्ते बाद है। ठीक है, ओके। सो असेसमेंट अभी होती है, नो वरीज। तो दूसरी सिचुएशन आपको मिल सकती है कि बच्चा आईयूजीआर भी है और उसका जो अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर है वो भी खराब है, बट डायस्टोलिक फ्लो जो है वो मौजूद है, एंड डायस्टोलिक फ्लो। तो फिर क्या करना है, इस बच्चे का ट्वाइस वीकली कराना है अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर। ठीक है, और ग्रोथ स्कैन इसका वीकली है। तीसरी सिचुएशन है कि तीसरा बच्चा है जिसका जो है डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट है या रिवर्स है, इसका क्या करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ठीक कर लूं। अच्छा, इसमें गलती क्या है, कौन बताएगा। क्या गलती है, चलो गलती बताओ, है तो सही। क्या गलती है, जब एब्सेंट या रिवर्स आफ्टर 32 वीक आएगा तब तो डिलीवरी करना है ना। वाई मॉनिटरिंग, है ना नीलम, ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, नो मॉनिटरिंग, डिलीवरी। हाँ, बिफोर 32 क्या करना है आपने, बच्चा छोटा है, अब हम चाहेंगे कि प्री मेच्योरिटी का भी रिस्क है और अब आईयूजीआर का भी रिस्क है, तो इसको आउटवे कर लेते हैं। कैसे आउटवे करेंगे, जब एब्सेंट या रिवर्स हो जाए अम्बिलाइकल आर्टरी पे फ्लो, तो फिर आपने डेली करवाना है। डेली क्या कुछ करवाना है, अम्बिलाइकल आर्टरी भी, डक्टस विनोसिस भी। अगर डक्टस विनोसिस नहीं है तो फिर अम्बिलाइकल वेन में पल्सेशन देखनी है या फिर कंटिन्यूस टीचिंग। ठीक है, बट द बेस्ट वन इज डक्टस विनोसिस, अगर ये आपकी ऑप्शन में है। तो ये डेली डॉपलर हो गया है। ठीक है, और वीकली इसका ग्रोथ स्कैन होगा। हम वीकली से नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि इससे नीचे अगर हम मोर फ्रीक्वेंट ग्रोथ स्कैन करेंगे ना तो हमें ऑब्वियस डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द होल गाइडलाइन आप यहाँ फंस जाते हो कि किसका 2 वीकली कराना है अम्बिलाइकल आर्टरी, किसका ट्वाइस वीकली कराना है, किसको बस डिलीवर करना है, और किसका डेली कराना है। तो अगर आप इस तरह से सिनेरियोज बना लेंगे तो फिर योर लाइफ विल बी इजी। और सेम फॉर ग्रोथ स्कैन, एक बच्चा जिसको आईयूजीआर नहीं है उसकी सर्वेलेंस में हमें मोर देन 3 वीक्स या मोर देन 3 वीक्स चाहिए, बट वंस डायग्नोज्ड कि आईयूजीआर तो आ गया, तो उसका ग्रोथ स्कैन 2 वीकली है। नो, इट्स नॉट 3 वीकली लाइक दिस। ठीक है, और एवर अगर अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर खराब है बट डायस्टोलिक फ्लो मौजूद है तो फिर वीकली, या एब्सेंट भी है तो वीकली, ऐसे छोटा हम कर नहीं सकते। तो ये टेबल आई थिंक तो इसमें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एग्जाम फेवरेट कुछ स्लाइड्स है जिसमें ये सारी गाइडलाइंस की अपनी आपकी रिवीजन हो जाए। नहीं आता तो डॉक्टर नीलम आपकी हेल्प कर देंगे, नो वरीज। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो है और बिफोर 32 वीक आपने डिटेक्ट कर लिया है, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, राइट इन द चैट बॉक्स। आइडियली अभी हमने गाइडलाइन पढ़ी है ना कि 32 वीक से पहले एब्सेंट या रिवर्स आ जाएगा तो इमीडिएट डिलीवर नहीं करना, क्योंकि बच्चा प्री मेच्योर भी है। तो व्हाट वी शुड डू, राइट इन द चैट बॉक्स। फंस गए। Samreen says do daily umbilical artery Doppler and ductus vinosis. Excellent, excellent. ठीक है, तो ये हमारे डिलीवरी को टाइम करेगा, सही। ओके, तो जस्ट एक मिनट। यस, अच्छा, अब एक और सिनेरियो है। प्राइमरी ग्रेविडा है, उसका अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर आपने करवाया है, वो रिवर्स है, क्या करना चाहिए बिफोर 32 वीक्स। अभी अभी आपने समवन जस्ट रोट,
ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलें अब आप 1 बाय 1 मुझे बताएं। बिफोर 32 वीक्स एब्सेंट या रिवर्स है, आपने ग्रोथ स्कैन वीकली कराने या 2 वीकली कराने हैं? ओके, एक्सलेंट, वीकली। अच्छा, तो और इसका जो डोपलर्स हैं, इसके सारे डोपलर्स जो डिलीवरी टाइम करेंगे या जो मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करेंगे, वो सब के सब वो कब कराने हैं, वीकली या डेली? अभी कराया था। एक्सीलेंट, डेली कराने हैं। ठीक है, इसको स्टीराइड लगाना है। हाँ, स्टीराइड पे लगाना है। अभी डॉक्टर नीलम ने बताया 24 से लेके 35+6 तक आपने स्टीराइड लगाना है। ओके, ये वैसे सिर्फ IUGR के लिए है। नॉन IUGR में हम एक हफ्ता पीछे आ जाते हैं, 34+6 तक करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंट गाइडलाइंस ऑन स्टीराइड्स। तो आपने क्या करना है, अगर आफ्टर 32 वीक्स है तो बस स्टीराइड कवर देंगे और इलेक्टिव सेक्शन कर देंगे। बिफोर 32 वीक्स है तो फिर डेली इनके डोपलर होंगे और वीकली इनके ग्रोथ स्कैन होंगे। ठीक है, चलें। तो इसमें जो हमारा कीवर्ड है वो जेस्टेशनल एज है। जेस्टेशनल एज विल डिसाइड के मॉनिटर करोगे या डिलीवर करोगे। तो ये जो मैंने की लिखी है, ये मैंने अज्यूम किया है कि जेस्टेशनल एज 32 वीक से ज्यादा है, तो फिर ये आपकी सबसे सुटेबल की होगी अगर ये आपकी सारी कीज में है। स्टीरॉयड कवर दें और इलेक्टिव सेक्शन करें। चलें, अब यही पेशेंट, एक और पेशेंट है, अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर है, उसका खराब है। ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि 31 वीक पे है, खराब है और 31 वीक पे है, बट मूवमेंट्स कम है। आपने अब मूवमेंट्स कब होती है, क्या करते हैं हिस्ट्री के बाद पेटल हार्ट रेट सुनते हैं, पॉजिटिव बदल CTG करते हैं, आपने कर ली CTG, वो भी खराब है। अब क्या करना है, अब बताओ आइडियल प्लान। हाँ, अब नहीं जाना, 31 पे है, बच्चा छोटा है, अब तो वो मरने वाला है बस। तो इमिडिएटली डिलीवरी प्लान करनी है। तो स्टीराइड कवर देना हेयर 48 आवर तक इस CTG को विद रिड्यूस पेटलर मूवमेंट विद दिस हॉरिबल डोपलर लेके बैठे रहोगे? नो यार, CTG खराब है। चलो, CTG एक्यूट हाइपोक्सिया बताती है, अब वो भी खराब है, मूवमेंट्स भी नहीं है, डोपलर भी खराब है, अब तो बस IUD का वेट कर रहे हो, इमरजेंसी सेक्शन करेंगे इसका। ठीक है, तो और यही यही EMQs में यही होता है, इलेक्टिव सेक्शन, इमरजेंसी सेक्शन, स्टीराइड कवर, नो स्टीराइड कवर, और अब बिल्कुल घूम जाते हो, घूमना नहीं है। ठीक है, थर्ड सिनेरियो, प्राइमरी 37 वीक्स पे IUGR डायग्नोसिस है, डायग्नोज्ड है। अब देखो 32 वीक के बाद जब IUGR होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम डोपलर करवाते हैं। डोपलर अगर नॉर्मल है तो हम हर 2 हफ्ते बाद ग्रोथ स्कैन और डोपलर रिपीट करते जाते हैं। लेट्स सपोज ये वही वाली मरीज है, 37 पे ये पहुंच गई है। अब हमने इसकी वो डिसाइडेड कि इसका जो है डिलीवर करें या ना करें। तो टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए हम क्या कराते हैं, आफ्टर 32 वीक्स मिडल सेरेब्रल आर्टरी। मिडल सेरेब्रल आर्टरी कराई तो वो तो कह रही है कि पल्सरेटी इंडेक्स लेस देन 50% है। अब क्या करें, इसको 37 पे डिलीवर कर दें या बस अभी भी कंसिडर करें? मतलब 2 ऑप्शन है, डिलीवर एट 37 वीक्स, ऑफर डिलीवरी या रिकमेंड डिलीवरी। इन दोनों में से चूज करो। डिलीवर तो कर रहे हो, अब सेंसिटिविटी आ गई है एक और, ऑफर या रिकमेंड। नो 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 नो, समरीन, नो डिप्लोमेसी, यूरी, ऑफर या रिकमेंड। हाँ, एक्सीलेंट। देखो, जब जब डोपलर आपका खराब आ जाएगा 32 वीक के बाद, ठीक है, और आपने टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए MCA करा लिया, तो MCA भी खराब आ गया, तो अब तो ऑफर, अब तो रिकमेंड ही करना है ना। यही सबसे स्ट्रॉन्ग चॉइस है कि अब तो नहीं जाना, क्योंकि MCA भी खराब है और ये IUGR भी है। ठीक है, और डोपलर भी इसका खराब है। चलो, तो डिलीवरी रिकमेंडेड है 37 वीक्स पे। और अगर आपने प्लान किया है डोपलर, लेट्स सपोज इसका, अब देखो एक और बात बताती हूँ, डोपलर अगर जब तक एब्सेंट या रिवर्स नहीं आता तब तक आप कर सकते हो ना इंडक्शन। हाँ, लो थ्रेशोल्ड रखते हो सिजेरियन सेक्शन का, बट प्लान तो इंडक्शन ही करते हो अगर पेशेंट इसको ऑप्ट करती है। However, अगर पेशेंट ने ऑप्ट किया कि नहीं मुझे करना है डिलीवर थ्रू सिजेरियन सेक्शन, तो अगर डिलीवरी थ्रू सिजेरियन सेक्शन है तो फिर स्टीरॉइड कवर देंगे एट 37 वीक्स। अदरवाइज आपने देखा ना, हमने तो कहा था 35+6 तक देना है स्टीरॉइड कवर। अब ये चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग EMQs में ना
दफा नहीं हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है, क्या गेम हुई है। देखो अभी हमने बोला IUGR में हमने स्टेरॉइड देना है 24 से 35+6, ठीक है। इधर तो ये 37 है, अब क्यों स्टेरॉइड देंगे? अब इसलिए दे रहे हैं कि डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हो रही है। अगर प्लान डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से टिल 39 होगी तो देना है स्टेरॉइड, तो देंगे इसको, ठीक है। अब समझ आई ये बात? तो आपको EMQs में बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। एक तो ये मिलेगी कि ऑफर करो, दूसरी मिलेगी रिकमेंड करो, तीसरी मिलेगी स्टेरॉइड करो क्योंकि और इफ इंडक्शन प्लान या स्टेरॉइड दो इफ सेक्शन प्लान, और वो भी 37 पे। और ये चारों की चारों आप एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे अगर आप इस तरीके से इस गाइडलाइन को नहीं पढ़ते, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरी बात ये कि हम MCA कब कराते हैं एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। एक पेशेंट जो है तो IUGR, ठीक है, और उसका डोपलर आपने कराया है वो नॉर्मल आ रहा है, उसमें कराते हैं MCA टू टाइम द डिलीवरी, ठीक है। अगर डोपलर उसका खराब आ रहा है, मतलब ST रेशियो उसकी मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, एब्सेंट या रिवर्स नहीं है, और आप इसमें आपने तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट रिकमेंड करनी है डिलीवरी बाय 37, नो नीड ऑफ MCA हेयर। इसको बाय डिफॉल्ट विद एबनॉर्मल डोपलर आप 37 पे रिकमेंड करोगे डिलीवरी। वो जो आपने वो जो इतना बड़ा पीछे एल्गोरिथम पढ़ा है ना, ये वहां से इस तरह से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं इन एग्जाम। अच्छा चलो अब कुछ और पजल्स हैं। प्राइमी 41 बुकिंग पे आ गई, क्या करना है? सीरियल या यूट्राइन आर्टरी डोपलर? चूज वन, चूज वन। वैसे परवीन सही दिमाग तुम्हारा चल रहा है, चलो बाकी लोग भी बताओ। कमल जूम यूजर, टेल मी। 40, अभी तो मैं डॉक्टर नीना ने बताया नहीं, 40 से ऊपर है मेजर रिस्क फैक्टर है, 30 से 35 है, 35 से ऊपर माइनर है, और वो भी एकलौता, उसमें तो कुछ नहीं कर रही है, तो 40 से ऊपर नहीं हो गया, सीरियल जाएंगे इसमें 26 28। उन्होंने बताया था कि अगर माइनर भी जैसे नली माइनर आ गया इसको भूल जाओ, अगर एक भी मेजर है वो फर सीरियल मिल गया 40। चलो दूसरी प्राइमी बट थैलेसीमिया मेजर है और एज 31 है, चलो अब इसमें क्या करोगे? आई नो तुम लोगों ने थैलेसीमिया मेजर नहीं किया अभी, तो लेकिन देयर इज कुछ डिफरेंस है, वो ये है कि विद थैलेसीमिया मेजर हम बहुत अर्ली असेसमेंट करते हैं, 24 वीक से करते हैं, ठीक है। बाकी सब में आप देखेंगे 26 28, बट इन थैलेसीमियाज इन ओबेसिटीज इन सिकल सेल्स वेरी अर्ली 24 से। अच्छा फिर थर्ड सिनेरियो है बिफोर 32 वीक्स, कौन सा डोपलर है जो सर्वेलेंस के लिए कराना है? ऑप्शन डक्टस विनोसिस, पल्सनिटी इन अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर। चूज वन अमंग 3। जी परवीन, समा, जूम यूजर सब टेल मी, अब फंसोगे इधर। एक्सीलेंट कमल, ग्रेट। कमल अनम्यूट करो जरा खुद को, क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, जॉब कर रही हूँ, रेगुलर जॉब है मेरी WMO की। अच्छा तो और साथ बाकी में क्या पार्ट किया? 2 की तैयारी। FCPS FCPS तो मैंने कर ली है ना, आपके साथ ही किया था डॉक्टर ने। चलो इसीलिए अच्छी बच्ची हो हाँ हाँ जी, एक्सीलेंट। थैंक यू। देखो हम लाइक कर, अब बच्चे क्या करते हैं सर्वेलेंस के लिए, क्योंकि 32 वीक देखते हैं, वो कहते हैं भाई डक्टस विनोसिस, वो भाई वो टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए था, ठीक है। कराना अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर है बिफोर 30 और आफ्टर 32 फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी फॉर सर्वेलेंस, यही प्राइमरी है, नो बायोफिजिकल नो CTG नथिंग। ओके अदर सिनेरियो, तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? मैं ऑलरेडी एक छोटी सी गाइडलाइन को हमने खिला के लंबा कर दिया है। लो more quizzes if you are willing। नीलम क्या ख्याल है, ले लें इनसे क्विज? अच्छा पढ़ाया अपने आंसर तो ये कर रहे हैं। ओके यू पीपल आर रेडी, गुड। चलो प्राइमरी 38, BMI 36, स्मोकर 7 cigarettes per day and previous history of preeclampsia। इसको सुकून से बैठ के काउंट करो एंड टेल मी
सीरियल आर स्टॉप करोगे 20 वीक पे फॉर अम्बिलिकल आर्टरी डॉप्लर? चलो चलो क्विक क्विक। $1 million क्वेश्चन। कमल, अभी तुम्हें डॉक्टर नीलम ने पढ़ाया था एक बड़ा डब्बा 3 माइनर रिस्पेक्टर वाला, उसके नीचे था मेजर रिस्पेक्टर वाला, और सबसे नीचे एक और भी था BMI 35 पॉली फाइब्राइड। वो किधर जा रहा था? एक्चुअली लेट गया था, सॉरी मैंने सेशन नहीं लिया। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। इस पे हम सीरियल करते हैं। 35 से ज्यादा BMI मोटी औरतें होती है ना, उनको फिर सीरियल करते हैं। ठीक है, 26 28। अच्छा, बिफोर 32 वीक्स डोपलर बताएं। अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर है इसका खराब, ठीक है। अब आपने टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए कौन सा दूसरा अल्ट्रा डोपलर करना है? ऑप्शन है आपके पास मिडिल सेरेब्रल आर्टरी या अम्बिलिकल वेन। तुम लोग सोच रहे हो डक्टस विनोसिस बताऊंगा, है वो मैंने तो बताया ही। बिफोर 32 वीक्स का MCA तो वैसे ही आउट हो गया। देखो फर्स्ट लाइन मैंने नहीं दी डक्टस विनोसिस, सेकंड तो था ना, पल्सेशन इन अम्बिलिकल वेन, आप वो चूज कर लें। चलो, डक्टस विनोसिस ही आइडियल है, बट समटाइम ये आइडियल नहीं आता एग्जाम में, तो फिर आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है। सो दैट इज अबाउट, अब ये देख लो ना, वोमेन अनस्टेबल फॉर मॉनिटरिंग या लार्ज फाइब्राइड या BMI 35, ये कहाँ जा रही है? सीरियल, रुके नहीं दरमियान में यूटाइन के लिए। दूसरा ये कि अगर हाँ, दूसरा एक और बात बता दूं, अभी तो ये एक ही हम लोग कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम करेंगे थ्रोम्बोम्बोलिज्म प्री मतलब नेटल एंड पोस्ट नेटल असेसमेंट, उसके भी सारे यही ऐसे ही रिस्क फैक्टर्स हैं, वो मिक्स करेगा आपको। जब हम करेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन की गाइडलाइन करेंगे, उसके रिस्क फैक्टर्स कम करेंगे। जब हम डायबिटीज करेंगे तो डायबिटीज में ओजिडिटी किसका कराना है, किसका नहीं कराना, उसके तंग करेंगे। और ये IUGR के, तो ये IUGR की GTG के रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज की नाइस के रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, और हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स जिनमें आपने लोप्रिन देनी है या नहीं देनी, ठीक है, 1 मेजर या 2 मॉडरेट समथिंग। तो ये सारे एंड पे मैं तुम्हें लिख के देती हूँ ना, इनका मिक्स हो जाना जरूरी है। तो यू विल नॉट रिवाइज IUGR alone, डोंट रिवाइज IUGR alone, ऑलवेज रिवाइज अदर अदर रिस्क फैक्टर्स एज वेल, जो कि फ्रीक्वेंटली मिक्स होंगे आपसे। तो जब भी आपने करने हैं ये चारों के चारों गाइडलाइंस खोलनी है, या अपने मोबाइल में एक लिखो कि डिफिकल्ट टेबल्स या सिमिलर टेबल्स कुछ भी बनाओ, उसमें इन चारों के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो अपलोड कर दो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। और जब भी टाइम मिले ना, इन चारों को इकट्ठे रिवाइज करो, फिर आपको पता चलेगा कि 2 पे क्या करना है, 3 पे क्या करना है। अरे ये लोप्रिन के लिए है, वो तो ग्रोथ स्कैन के लिए है, ये डोपलर के लिए है, वो हेपरिन के लिए है, इसमें ओजिडिटी कराना है, ठीक है। और ये BMI का भी ऐसे ही बनाओ कि कौन से BMI पे क्या करना है, 25 पे क्या करना है, 18 से पहले क्या करना है, 35 पे क्या करना है, 40 पे क्या करना है। ऑब्वियसली मेड होम के प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिल जाएंगे सारे जो कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स, बट आप खुद से तैयारी करते हो तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। सो मुझे लगता है कि तुम लोग पास हो। हमने आगे जब पढ़ाया है तुम लोगों का, जो मैंने क्विज लिया है, तो थोड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया। कीप डूइंग दिस, और इंशाल्लाह
और देखो एक एक गाइडलाइन की है ना जीटीजी की, बाकी ये 70 है टोटल अप्रोक्सीमेटली। ये भी ऐसे कर लो, 60% तुम्हारा जीटीजी से ही आना है पार्ट 2 एमआरसीयूजी का, और 65 पे पास हो जाता है, और बस 5% ऐड करना है। ठीक है, अगर इसी तरह एक एक जीटीजी रोज करोगे ना, आई विल मेक योर प्लानर एज वेल, 70 डेज का नेक्स्ट सिर्फ जीटीजी करेंगे, तो यार 60 तो आ ही गए ना। बाकी 5% कुछ नाइस से टोक शुक से मिला के पूरे पार्ट 2 का 65-68 तक ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता रिजल्ट, तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू नाइल, नीलम, आप आर योर टाइम। बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया। और नीलम, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश बोलने में तो नो वरीज, मेरी जो ऑडियंस है ना ये सारे मेरे पार्ट 2 के बच्चे होते हैं, एमएस के, एमसीपीएस के, तो या इंडियंस होते हैं, तो उनको भी अच्छी आती है उर्दू, बल्कि बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी तो दे कैन अंडरस्टैंड उर्दू एज वेल। और काफी स्टूडेंट्स इंडिया से भी हैं, तो दे लव टू लिसन यू इफ यू विल टीच देम इन द लैंग्वेज यू नो मोस्ट बेटर। तो कोई मसला नहीं है। अभी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी इनरोल नहीं कर रहे, तो वी आर फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज लाइक उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, तुम लोगों को क्या लगता है वैसे किसमें सुनना है? देखो पार्ट 2 तो वैसे इंग्लिश मतलब इंग्लिश में ही होगा पेपर आपका, बट अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मीन्स एमसीक्यू से करनी है ना, तो कर लेते हो। ओके, उर्दू इज बेस्ट, चलो सभी लिख दो, फिर हम प्लान कर लेंगे। मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, मेरे एक्सेंट थोड़ा मुझे तंग करता है, बाकी तो डॉक्टर अक्सर बेस्ट है, शी विल टीच यू इन एनी लैंग्वेज जो भी आप ऑप्ट करोगे, एंड डॉक्टर नीलम भी बहुत अच्छा बोलती हैं। बट जो 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 ज्यादातर कैंडिडेट्स प्रेफर करेंगे जिस मीडियम को, हम उसी मीडियम में डिलीवर करते हैं। ठीक है, चलो, ओके। सो परवीन सेज उर्दू, कमल सेज उर्दू। चलो, तो अब नीलम कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई थिंक यू आर पश्तो स्पीकिंग। कर लोगे?